25, 25, हाँ ओके लाइव. गुड मॉर्निंग, वी आर लाइव नाउ. जय महाकाल, ठोको लाइक दबाकर. चलिए, जय महाकाल. फ्लैप ऊपर कर दीजिए ना, तो डायरेक्ट हवा नहीं लगेगी, तो ठंड कम लगेगा. क्यों? बट 25 नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे. गिव टाइम. देखिए, एसी ऑन होने के बाद ऐसे भी 3 मिनट बाद ही ठंडा करता है जब उसका कंप्रेशर ऑन होता है. उतना तो पेशेंस रखना. हाँ नहीं, सही है. चलिए, कोई बात नहीं. सो वी आर डूइंग 1935. ठीक है, आप क्या लिखते रहते हैं? चलिए, सो 1935 we have discussed till the last what we have discussed 1935 provincial autonomy is done, and then we have done this all India federations division of power. Yes, right. Then next is diarchy at center. Now diarchy at center. It's clear. Now what is diarchy? Dual government. Dual government. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने डायरकी कहाँ स्टार्ट की थी? प्रोविंसेस में. देयर इज अ प्रोविंसेस, सॉरी, देयर इज अ प्रोविजंस इन द एक्ट टू एस्टैब्लिश डायरकी एट प्रोविंसेस. आज कहाँ हैं लोग? देयर ऑन वेकेशन. सो by this act 1935, if we say the diarchy in provinces was abolished and a diarchy at center was established. So diarchy means dual government, right? So under this diarchy, as we know that there is been a central subject was divided into two parts. One is reserve subject and another is transfer subject. ठीक है, दिस वॉज प्रोविजन 1935. अब 1935 अंडर दिस रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट, व्हाट आर द प्रोविजंस इन द 1919? प्रोविजंस क्या था? व्हाट वाज द प्रोविजंस इन 1919 रिलेटेड टू डायरकी? क्लास रिवीजन के लिए थोड़ी है. Yes, the subject of center was divided into reserve and transfer. Then reserve subjects is been governed, administered through the governor general with his council, which are not responsible to legislature. ठीक, तो जो रिजर्व सब्जेक्ट था, it will be, this will be administered by governor general and his council. ठीक, right? And this council members were appointed by governor general. The councils were appointed by governor general, and these council not responsible, right? Like defense, external affairs, religious, trade issues, tribal issues, right? Press, police, all comes under the रिजर्व सब्जेक्ट. इसको हमने डिटेल में प्रोविंशियल्स में किया था, राइट? देन व्हेन वी कम टू द ट्रांसफर सब्जेक्ट, तो ट्रांसफर सब्जेक्ट के प्रोविजंस क्या थे? प्रोविंसेस में डायरकी का क्या प्रोविजंस था? व्हाट इज द प्रोविजंस इन टू द डायरकी इन प्रोविंसेस?
वो सब्जेक्ट मैटर था। ट्रांसफर सब्जेक्ट से हम क्या समझते हैं, 1919 में क्या प्रोविजंस आर रिलेटेड ट्रांसफर सब्जेक्ट? Yes, administered by the Council of Ministers. So transfer subject is to be administered by on the advice of responsible legislature. This is directly in the provinces. It's clear? But here, Governor General was given an extra power to interfere in the state list also. It means the provinces which were been established by this federal systems, where the federal structure between the federal government and provincial government, but a true federal is not been established because there is an interference by the Governor General was allowed through a special power. ठीक है, अब provinces, now we are on the central government. So according to 1935, the diarchy which was abolished at provinces was abolished, and at center it was established. Is it clear? So this is a diarchy, right? Then to the legislature, there was a change in legislation also. So legislations now that is legislation having two houses. One is a Council of State and the other is Assembly. Lower house, Federal Assembly lower house, Council of State upper house. ठीक है, and along with this, in provinces except 6 provinces, all were having a unicameral. It means the British provinces, in 6 provinces of Britain, having a bicameral arrangement. That is, of first is Provincial Assembly, Legislative Assembly, and Provincial Legislative Council. But only in the 6 provinces like Bengal, Madras, Bombay, Bihar, Assam, and UP, United Provinces. So these are the provinces under which the provisions of bicameral was established, and rest of the provinces other than these 6 have a features of unicameral, that is having only of a legislative assembly, not of a legislative council. Is this clear? Any doubt, any confusion? Right? Chale, write down these 2 points related to 1935 Act. First, diarchy at the center. Diarchy at center. Diarchy at center. Diarchy at center. The subject under federal list were divided into the subject into federal list is divided into transfer subject
transfer subject, subject in the federal list. There was 3 lists created by the 1935 Act, right? So federal list was divided into, again there is a subdivision into the federal list basically under hierarchy systems. So subdivision में पहला आ गया transfer and the next is reserve. So first is transfer subject, which is to be administered. Transfer subject is to be administered. The subject under federal list were to be divided into first transfer subject. हाँ, एक transfer, एक reserve. We are writing about all this, right? So first transfer subject, write about the transfer subject, that it is to be administered by the Governor General with his council of ministers, not more than 10 members into council of ministers. Next point, these council of ministers were responsible to the legislature. These council of ministers were to responsible to legislature, central legislature. Next one, subjects like local government, yes, forest, education, health, and so on. I mean, these are the certain examples which is kept under the transferred subject. क्या कंफ्यूजन है? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट लिख रहे हैं आप अभी, नॉट. नेक्स्ट इज रिजर्व सब्जेक्ट. ट्रांसफर सब्जेक्ट मतलब जिसपे गवर्नर जनरल कोई भी लॉ, इट मीन्स दैट द लॉ विच इज टू बी मेड बाय द गवर्नर जनरल इज विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Yes. No, that is kept under the reserve subject. So in the federal list, as we have seen that the federal list, the list is created by Government of India 1935, and those which were to be importance of national importance was kept under the federal list, right? And again the federal list is subdivided into two parts, reserve and transferred. So transferred were to be administered by the advice of Council of Ministers. Is it clear? And reserve is to be administered by Governor General in his council, to whom Governor General is appointing authority, and they are not responsible. ट्रांसफर सब्जेक्ट में, फेडरल लिस्ट में चेक कीजिए, और लोग भी चेक कीजिए. आई मीन आई एम आस्किंग देम. मैंने फेडरल लिस्ट के बारे में कहा है. No, it is not this defense was not under the provincial list. It was under the federal list. अगर मैंने ऐसा कहा हो तो सबने लिखा होगा ना फिर.
हाँ नहीं तो हो सकता देयर वुड बी अ कंफ्यूजन. दीज नेशनल इंपॉर्टेंस वर केप्ट अंडर द फेडरल लिस्ट. देयर वाज 3 लिस्ट. अब you just go to the list where you have written the 3 list related to the 3 list. Have you written the 3 list? 59 items, 36 items where the federal list, provincial list and concurrent list. So, but in the provincial list, I didn't give you the list. I said that the provinces by 1919, it was demarcated into the subdivision of transferred and reserved subjects. And especially I mentioned in provisions in the reserve is about the budget, economic. Where someone has asked that economy को हम कहाँ रखते हैं, तो I said economy was kept, though in 1919 the provinces were allowed to discuss and present their own budget. Do you remember this? Right, but it was kept under the reserve subject, which is to be administered by governor and with his council, who are not responsible to the provincial legislature. No, the subject was not decided, the local important subject. No, it always been with this federal. प्रोविंसेस को डिफेंस कैसे दे देंगे? ठीक है. नेक्स्ट इज रिजर्व सब्जेक्ट. इट इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नर जनरल with the help of 3 counselors appointed by himself. Reserve subjects controlled by governor general with the help of 3 counselors which were appointed by governor general, controlled by the governor general with the help of 3 counselors. Up whom were appointed by governor general, means these council were appointed by governor general himself. ठीक है. Next point, they are not responsible to legislature. A subject like defense, write some example of subject which was kept under the reserve subject, like defense, church related, church, religious, church, oh Lord, oh God, church related, external affairs, press, police, press, police, taxation, justice, power resource, tribal affairs, and so on. Next point, governor general, these are the subject related, right? Rather write in a note that governor general has special power. Governor general has special power to interfere in the transfer subject also. Transferred subject also. Transfer subject also. So it means that he can interfere. It means he can deny the advice of the Council of Ministers. Okay? But this arrangement was done in the 1935. But this arrangement does not came into the practice.
till 1937 when the election was concluded. So till that it was administered through the old mechanism only. Though this arrangement was given by by Governor General, sorry, not by 37 till 1947, but this arrangement was not kept into the practice. It means all the subject matter which is to be kept under a transfer or reserve is not came into being in practice, rather it is to be controlled by the Governor General through his council only, without enacting with the Council of Ministers. Yes, because though there was a provision in 1935 Act, but still it does not come into being. Right? Next is bicameral legislation. So you can write also if there you want, but this arrangement, that this of transfer and reserve subject arrangement never came into being, and the Governor General act through his old executive councils. कंफ्यूज लग रहे हैं क्या आप लोग? नहीं ना? Next is bicameral legislations. So federal legislations would be established two houses. Would be established two houses. Two would 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 be established two houses. Would be established two houses. So Federal Assembly would be now be established as a two houses. One is Legislative Assembly, sorry, Federal Assembly. First is Federal Assembly, also known as Lower House. Federal Assembly, that is also known as Lower House. Continue the point under the Federal Assembly. It had a term of 5 years. Federal Assembly had a term of 5 years. Next. Second is Council of State, that is Upper House. It's clear? And this is for the permanent nature. In the permanent nature, there is no time period for the upper house. Next point. Both the houses had representative from princely state also. Both the houses have representative from princely states also. Princely state also, but only through nominations by rulers of the state. But only through nominations, process of nominations by the rulers of the states. ठीक है? It means कि election was not the provisions in the Indian states. So member of the Indian states were allowed to be part of both houses, Federal Assembly and Council of State, but only through the nominations. The ruler will nominate
the representative of their state into both the houses. So there is no provision of elections. Ruler, princely state kings. Ruler means princely state kings. Anyone. There is no provision that whom to nominate. Their family members, their close one, anyone can be represented, nominated. This is a provision given to them. ठीक है. Next point. Members from provinces were to be elected. Members from provinces were to be elected. Member from provinces were to be elected, and Governor General has power to nominate some members from provinces. So power to nominate some members from provinces. So in these two houses, that is Council of State and Federal Assembly, members were come from two, one from Indian states and one from provinces. In the both, ठीक है, दोनों में दोनों ही जगह से members आ रहे थे in both the houses. So member from Indian states will come by the nominations. And who has a power to nominate? The king, the ruler, the prince of the state. Travancore, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद एंड छोटे मोटे जो अराउंड 560 और 580 जो रियायतें थी वहां से जो उनके रूलर थे, प्रिंसेस, जिस नाम से भी वो जाने जाए, वो उनको नॉमिनेट करेंगे इन दोनों हाउसेस में एज देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन स्टेट्स. सो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इलेक्शंस of a representative of Indian states in the House, Federal Assembly, right? But in terms of provinces, now members from the provinces will come through two ways again. One, through election. Some members will be elected from the provinces in both the houses, ठीक? And some members were to be nominated by Governor General. So this is an arrangement into the federal assemblies. Of members of Federal Assembly and to the Council of States. Of federal legislation has been made bicameral by this, right? And the members will come from the nominations and from elections, but Indian state, it means these two houses, the federal legislature has a member from all the British territory, including the provinces and Indian states. It's clear? This federal assembly has a lifespan of 5 years. This is a permanent in nature. Yes. I talked about British territory. British territory, India. India, the whole territory of India. But in India, there is two types of arrangement by the British. One, where a British has a direct control, that is known as a provinces. Second, where Britishes were in the arrangement of paramountcy, that is Indian states, though they come under the territory, British territory. So this Indian states with whom the Britishers has an arrangement of paramountcy, and it has been allowed the Indian states that they can send their representative into the House, federal legislature, but through nominations. And provinces were said that through nomination also, but nominating power was given to Governor General, and rest can be sent through the elections.
इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Bicameral legislation were introduced in 6 provinces. Bicameral legislations were introduced in 6 provinces. Like Bihar, Bengal, Madras, Bombay, Bihar, Bengal, Madras, Bombay, Assam, and United Province. Clear? So this is a provisions under the bicameral legislations which was established by the 1935 Act. Any doubt till here? Right? Now write down the next. Now there are two small features of, like, one is federal court which was established through the 1935 Act which was established in 1937, and some miscellaneous provisions of 1935 Act. So write down next that federal court. Federal court, court, C-O-U-R-T, court. Federal court was to be established at Delhi. Federal court was to be established at Delhi Indian states. With the Indian states, the Britishers has a paramountcy, an arrangement of paramountcy. इसका मतलब ये है कि इंडियन स्टेट्स को उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं लिया, उनके साथ एक अरेंजमेंट कर ली कि आप अपने देश को, अपने स्टेट्स को खुद चलाइए, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन कुछ मैटर हम अपने पास रखेंगे, जैसे डिफेंस हो गया, मिलिट्री का करना, और रिलेशनशिप विद द नेबर नेशंस, और इकोनॉमी। ये 3 चीज हम देखेंगे, बाकी चीजें आपको कैसे चलाना है ये आप देखिए, उसमें रूल बनाना, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसमें हमारा इंटरफेरेंस नहीं होगा। बट वेयर विद द प्रोविंसेस दिस अरेंजमेंट वाज नॉट देयर, ऑल थिंग इज बीन डन, एवरी मैटर विल बी डन बाय द गवर्नर्स। आप इसको ऐसे समझिए कि इन द टुडे सिनेरियोज इंडियन स्टेट्स को कंसीडर कर लीजिए आप स्टेट की तरह, बिहार, यूपी, बंगाल, ठीक, जहां पर स्टेट्स को दे दिया गया पावर कि आप अपने मैटर में कुछ भी करो, और आप प्रोविंसेस को समझ लीजिए आज के स्टेट्स की तरह। नहीं, मैं कुछ कंफ्यूज हूं। प्रिंसली स्टेट्स को आप समझ लीजिए आज के स्टेट्स की तरह, जहां पर उनको दे दिया गया फ्रीडम, और प्रोविंसेस को समझ लीजिए यूटीज की तरह, जहां पर वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं। तो सिमिलर, तो देयर वाज एन अरेंजमेंट ऑफ पैरामाउंटेंसी। ये आप पढ़ेंगे, आप झांसी जब पढ़ेंगे तब, आप सतारा पढ़ेंगे तब, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर में लिया गया अरेंजमेंट के, ठीक है। तो देयर यू विल लर्न कि जैसे उन्होंने मराठा के दौरान क्यों, व्हाई दे हैव बीन वॉर विद द एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, सतारा, देन दिस झांसी, दीज आर द एग्जांपल वेयर अ पैरामाउंटेंसी वाज साइंड। इंडियन स्टेट्स में प्रोविंसेस तो डायरेक्ट कंट्रोल में उनके, उसके सारे मैटर सब कुछ, जैसे आपने एग्जांपल लिखा प्रोविंसेस में बिहार, बंगाल, बॉम्बे, असम, यूनाइटेड प्रोविंस, इनमें ब्रिटिशर्स की डायरेक्ट कंट्रोल थी, ये डायरेक्ट ब्रिटिश के अंडर में थे। रूल्स रेगुलेशंस ऑन एवरी मैटर, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव थी उसमें ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट था। अब इंडियन स्टेट्स जैसे आपका हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, बीकानेर, आई मीन वडोदरा हो गया, एंड ऑल दिस द स्टेट्स, वहां पर रूल वाज कंसिडर्ड बाय द प्रिंसेस ऑफ द स्टेट्स, लेकिन एक अरेंजमेंट बनाया गया विथ देम थ्रू द ब्रिटिशर्स कि वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर। हम सिर्फ 3 चीजें रखेंगे, पहले हम आपको सुरक्षा देंगे,
सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हम ये एंश्योर करेंगे कि कोई भी पड़ोसी राज्य आप पे हमला नहीं करे। हाँ आप कह सकते हैं, आप उसका डिटेलिंग जब आप पढ़ेंगे उसका टर्मिनोलॉजी, तो दैट यू विल इन द हिस्ट्री, आई एम गिविंग यू द जिस्ट। हाँ वो उनका रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिशर्स का, दैट्स भाई प्रैक्टिकलिटी की बात नहीं, मैं थ्योरेटिकल की बात कर रहा हूं कि देयर इज अ प्रोविजंस कि एक हमारा स्टाफ आपके इसमें होगा कोर्ट में, कि जब भी ऐसा मैटर आए वो देखेगा, रेस्ट आप अपना काम कीजिए। सो दिस वाज अ अरेंजमेंट। नाउ इज इट क्लियर? तो जहां जरूरत पड़े मैं हम कनेक्ट करूंगा, ओके, आई विल कीप इन माइंड, बट मैं हमेशा अक्सर टॉपिक को जैसे आपको बताता हूँ पढ़ने वैसे पढ़ाता भी हूँ, इंटरलिंक करके, तो उससे क्या है चीजें बेस बनकर समझने में इजी होती है। प्रोविंसेस के डायरेक्टरी को हटा दिया गया, सिर्फ 6 स्टेट में रखा गया, 6 प्रोविंसेस नॉट स्टेट। नहीं, कहां, आप फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं देखिए, सेंटर का मतलब फेडरल कोर्ट का मतलब क्या हो गया, फेडरल असेंबली या फेडरल लेजिस्लेचर, कि आप एक पार्लियामेंट जो पहले ब्रिटिश में काम कर रही थी, ब्रिटेन में जो पावर बना रहे थे, देखिए नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसको थोड़ा मैं और आपको ये करता हूं, कंफ्यूजन दूर होगा। तो 1850 एक्ट ऑफ 1858 से अरेंजमेंट क्या हुआ, ड्वेल गवर्नमेंट को खत्म कर दी गई, कंपनी रूल को एंड किया गया, और क्राउन्स के अंदर में क्राउन डायरेक्ट, नाउ द क्राउन बिकम द डायरेक्ट, और यू कैन से दैट नाउ द इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ क्राउन, ये रहा, एंड द क्राउन विल एक्ट थ्रू पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक। नाउ दिस ब्रिटिश पार्लियामेंट विल कंट्रोल इंडिया थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, which is going to be sit in the British Parliament, ठीक है। Now this British Parliament will govern India through गवर्नर जनरल, ये उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी का हायरकी है कि गवर्नर जनरल रिस्पॉन्सिबल टू एसओएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, मैंने पहले ही बताया था। इट्स नाउ इट्स बिन ऑल्टरनेटिव यूज, आप कहीं भी पढ़ेंगे कहीं गवर्नर जनरल लिखा है, अभी भी माउंट बेटन को गवर्नर जनरल बहुत बार बोला जाता है, तो वाइसरॉय बोलिए गवर्नर जनरल, इट्स द सेम थिंग, नॉमेनक्लेचर पावर बिल्कुल दोनों का सेम है। सो दिस इज एन एक्ट ऑफ, आप कह सकते हैं दिस इज अ वे हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल, राइट। इन 1919 टिल 1919 की बात करें, टिल फ्रॉम हियर टू हियर दिस अरेंजमेंट वाज यूनिटरी, it means in India the provinces were taking a power from governor general, governors were direct control under governor general, that is delegation of power हो रहा था till 1919। तो यहां जितने प्रोविंशियल असेंबली बन रहे हैं या फिर बजट हो रहा है, अगर गवर्नर जनरल कह रहा है कि आप इस मैटर पर डिस्कस नहीं कर सकते तो वो नहीं करेंगे। क्लियर? सो दिस इज एन अरेंजमेंट इन 1919। Now when we talk about the government of India Act 1935, so now this arrangement was abolished, now a federal arrangement was established. What does this mean? That both governor general and governors of provinces, ये दोनों पावर कहां से ले रहे थे? क्राउन से। गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस, तो अब इनके पास, अब इन्हें पावर कौन दे रहा था?
अब ये डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं थी. नाउ बोथ वर टेकिंग अ पावर फ्रॉम क्राउन. So this is a basic difference between till 1919 arrangement and from 1935 arrangements. So now under this came to be ruled through the legislative federal legislations and this through the provincial legislations. अब ब्रिटिश इंडिया में अगर we are talking about the British India as a whole, British India composed of two things, one provinces and one is Indian states. जिसको हम प्रिंसली स्टेट भी बोल रहे, रजवाड़े, जो हम नॉर्मल टर्म में रजवाड़े बोल लेते हैं, ठीक है, ग्वालियर, सिंधियाज एंड वॉट एवर योर एग्जाम्पल यू कैन टेक, राइट. नाउ दिस प्रोविंसेस वेर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स. और ब्रिटिशर्स इसको कैसे कंट्रोल कर रहे थे? गवर्नर के थ्रू. Before 1935, governors were doing in the provinces, controlling the provinces, which they have been giving power through governor general. जो गवर्नर जनरल को पावर, गवर्नर जनरल जो उनको पावर दे रहा था, उसके थ्रू वो प्रोविंसेस में काम कर रहे थे. लॉ बनाना, एवरीथिंग, वॉट एवर द इम्प्लीमेंटेशंस, एडमिनिस्ट्रेशंस, लेजिस्लेशंस, जो भी करना हो. Are you getting my point? Right? And all these acts were made by the British Parliament. Yes or no? यहां भी एसओएस का फंक्शन खत्म नहीं हुआ है. Still SOS there. And Governor General come under the control of SOS. रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, answerable की बात कर रहे थे हम. So provinces through the governors were come under the direct control of British. Now this provinces direct control till 1919 through delegation. Delegation of power. That is British India acting as an unitary. After 1919 Act, that is from the Government of India Act 1935, this provisions were acting through the governor and provincial assembly, which is having gaining a power from the crown. So power from crown. तो ये अरेंजमेंट हुआ 1919 और 1935 में. अब जब बात करते हैं इंडियन स्टेट्स की, तो देयर वाज एन डिफरेंट अरेंजमेंट विद द इंडियन स्टेट्स ऑफ अ ब्रिटिशर्स. उन्होंने उनको डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं कर लिया. सो हियर अरेंजमेंट विद देम. नाउ देयर इज नो प्रोविजंस ऑफ हैविंग असेंबली इन द इंडियन स्टेट्स, बट दे आर बीन रूल्ड बाय देयर ओन लॉज, कल्चर जो भी है उनका. अब पैरामाउंटेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड. What does this mean? That Britisher says that certain subject we are going to control, like security, defense, military, economic, and rest subject is going to be handled by the rulers by themselves, and British will not interfere in the other matters of their internal matters. उनको जैसे काम करना वो काम करेंगे. This was the arrangement. Till here it is clear. ठीक है. When come into the 1935, when we come to 1935, so 1935 Act has given a first provisions of all India federations. और ऑल इंडिया फेडरेशंस का प्रोविजंस क्या? दैट बोथ प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट्स वुड बी पार्ट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशंस, बट दिस फॉर द प्रोविंसेस इज मैंडेटरी.
कि आपको तो ज्वाइन करना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आप तो, आपको से तो पूछा भी नहीं जाएगा, हम डिसाइड कर रहे हैं प्रोविंसेस के बारे में, क्योंकि प्रोविंसेस में कोई रूलर है ही नहीं, ब्रिटिश ही काम कर रहे हैं, तो वो तो सवाल ही नहीं उठता है, ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि आप प्रोविंसेस के पास ऑप्शन था, नहीं, प्रोविंसेस में तो ब्रिटिशर्स हैं, तो ब्रिटिशर्स ये है कि हम तो है ही। इंडियन स्टेट्स के पास ऑप्शनल था, so they did not join, so this did not came. You have written that. But through distribution of list, a new arrangement was made between the provinces plus federal government, and they came into the arrangements of federations, federal systems, कि हम आपस में ही फेडरल सिस्टम्स बना लेते हैं। Yes or no? So this is how it has been working. अब क्लियर हुआ? ये बड़ा कंफ्यूज करता है। एनी मोर क्वेश्चंस? अब क्लियर है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, अब ये कंफ्यूजन आगे भी नहीं होगा अगर आप इसको रिवाइज कर लेंगे, ये कंफ्यूजन आगे बना रहेगा अगर इसके बाद आपने इसको दोबारा नहीं पढ़ा। रिवीजन चल रही है घर पे? फ्रैंकली नहीं, बहुत बढ़िया, एक्सपेक्टेड। बिना रिवीजन के कुछ नहीं आएगा मैम। क्वेश्चन से मुझे कभी टेंशन नहीं होता है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन आप पूछिए। नहीं, दैट्स इट। देखिए आप यू आर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप क्वेश्चंस पूछिए, मेरा काम है मुझे आपको उसको एक्सप्लेन करना कि क्या चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। ठीक है, जब ज्यादा चीज नहीं आ रही तो ठीक है आप अलग से पूछ लिए, दैट कैन बी टैकल अलग। बट द थिंग कि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं आपको वो कंफ्यूजन दूर ही नहीं होगा ना, मैं कितना भी खुद से कोशिश करके आपको समझा लूं, आप जब तक उसे पढ़ेंगे नहीं दोबारा तब तक नहीं क्लियर होगा। एंड दिस इज एन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तो व्हाट इज एन व्हाट आई हैव एन प्रिजम्पशंस, किसको आपने कर लिया होगा, दिस इज माय प्रिजम्पशंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो आई हैव नॉट इशू विद द क्वेश्चंस, कभी नहीं होता, आप क्वेश्चंस कोई भी पूछ सकते हैं, मैं उसको डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश हर बार करता हूँ, अलग अलग एक ही क्वेश्चंस को टैकल करने की। माय मेन मोटिव इज जस्ट कि आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना रिलेटेड टू फेडरल और प्रोविंसेस और इंडियन स्टेट से? ठीक है, ये भी क्या प्रॉब्लम है ना कि एनसीईआरटी भी आप लोग नहीं शुरू कर रहे हैं, दिक्कत यही है, इस दीज आर द बेसिक, ये एनसीईआरटी से ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आप लोग? स्टार्ट किया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। नाउ दिस इज द वे हाउ वी नीड टू proceed further with the interlinking of the subject, that is more important. So unnecessary pressure मत लीजिए, स्टार्ट कीजिए प्रेशर को डिमिनिश करने की कोशिश थ्रू द बेसिक्स, दीज आर द बेसिक्स एक्चुअली। और मैं बताऊं सही, बेसिक्स इतने बेसिक्स में कोई नहीं बताता, जितना बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूं इतना बेसिक्स कोई नहीं बताता। नहीं वो नहीं कि मतलब मैं बहुत उदार और दैट इज नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम ट्राइंग टू गिव यू द पॉइंट कि इट इज एक्सपेक्टेड कि जब आप यहाँ आए हैं तो एटलीस्ट कुछ बेसिक्स पे काम आप करके आइए, एंड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द बेसिस। एनसीईआरटी कुछ नहीं करना है,
मत लीजिए कोई बुक, एनसीईआरटी खरीद के बस पढ़ते रहिए, जितनी बार पढ़ सकते हैं, चीजें खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना? तो कीजिए, एटलीस्ट डू दिस, ठीक है? चलिए लिखिए, फेडरल कोर्ट। सो फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट दिल्ली फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स between provinces and also between center and provinces. ठीक, सो फेडरल कोर्ट को डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की तरह रखा गया कि किन्हीं दो प्रोविंस में अगर कोई डिस्प्यूट्स है, दैट इज मान सपोज बिहार और बॉम्बे या बिहार उड़ीसा, बिहार बंगाल बॉर्डरिंग एरियाज हैं, इफ दे हैव अ disputes related to any matter, that will be resolved by the federal court, not a supreme court, right? Or if there is a dispute between the federal government and any provinces, then this dispute will be resolved by this federal court, right? Next point, it was the federal court was to have one chief justice and in bracket write down the first chief justice name, Maurice, Mourice, Maurice Gere, Maurice, Mourice, Gwer, Gwer. This is the first chief justice of federal court. So you have written that federal court was to have one chief justice and not more than 6 judges appointed by governor general. भगत सिंह की फांसी कब हुई थी? 19 और फेडरल कोर्ट 1931। फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश कब हुआ? 1937 में। डेट लिख लीजिए, इट वाज स्टैब्लिश्ड इन 1937। सो फेडरल कोर्ट क्या है, डेट लिख लीजिए, इट वाज प्रोविजन बाय द 1935 एंड एस्टैब्लिश्ड इन 1937। तो 6 साल के बाद इन्होंने सजा दी अपॉइंटमेंट बाय। तो ऐसे लॉजिक्स को कंफ्यूजन की वजह से लगता है। नहीं नहीं, आपने कहा ना इन्होंने ही दिया था। हाँ, तो आपने कहा इन्होंने ही दे दिया था, तो मैंने कहा कि ये तो स्टैब्लिश ही 1937 में हुई थी और उनको सजा ही होगी 1931 में। अब ये नहीं पता इतना डिटेल, ये आप हिस्ट्री वाले से पूछिए। और इतने बारीक डिटेल मैं पहले भी कहता हूं कि आपको ना माइक्रो लेवल पे काम करने की जरूरत नहीं है। इन सब क्वेश्चंस को अगर आए भी ना, मान लीजिए यूपीएससी ने पूछ भी दिया, तो एकदम आउटराइट काट दीजिए, नहीं दूंगा इसका आंसर। हाँ, नहीं देंगे। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी कभी पूछेगी नहीं कि कौन सा जज ने उनको फांसी दी, तो फिर क्यों पता होना चाहिए? आपके पास में लिमिटेशंस हैं, तो उस लिमिटेशंस को यूज वहां कीजिए जिसमें आपको वो यूज हो सके। अननेसेसरी डिस्क को भरने से क्या मतलब है नहीं? अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कि उसका वो कौन था वहां पर, वो जेलर कौन था जिसने उनको लाकर खाना, क्या मतलब है सबसे? ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हाँ स्टेट पूछ लेती है, तो जब आप स्टेट में जाएंगे, स्टेट पीसीएस देंगे, तब का तब फैक्चुअल रटिएगा। सब तो फैक्ट्स है। यूपीएससी कंसेप्ट पे काम करवाना चाहते हैं आपसे
कि आपको फैक्ट चलो नहीं भी याद है, क्योंकि फैक्ट हर किसी को याद नहीं होता, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ रखा है ना, तो आप आंसर कर सकते हो, आप लिख सकते हो। यूपीएससी के लास्ट में लिखा रहता है, सिलेबस के लास्ट में, डज नॉट रिक्वायर स्पेशलिस्ट इन सब्जेक्ट। तो स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, माइन्यूट डिटेल्स ठीक है, नहीं मुझे भी नहीं पता, अगर नहीं पता आपको लगता है कि कैसे टीचर ये भी नहीं पता, नहीं पता नहीं पता, लेकिन ये मैं ये कह रहा हूँ कि इन सब चीजों पे ध्यान मत दीजिए। और कोई आपसे ऐसा मिल भी जाए ना फ्रेंड, जो ऐसी छोटी छोटी बारीकों पे आपको पता इसका ये था तुम्हें नहीं पता, तो बोले ठीक है तुम्हें पता मुझे नहीं पता। इन सब चीजों से अननेसेसरी आप ना एक बर्डन क्रिएट करेंगे। इन सब चीजें पता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए। आप क्वेश्चंस उठा के देखें तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी कभी नहीं पूछे हैं, लेकिन आप जैसे स्टेट पीसीएस उठाएंगे ना, आपको मिल जाएगा चौथा कंधा किसका था, वो दूध का खीर किसने दिया, ऐसा क्वेश्चंस आपको पीसीएस में मिलेंगे। रहने दीजिए उनको। हाँ वो पता नहीं कैसा क्वेश्चन था, एक ये भी था कि कंधा, चौथा कंधा किसका था, चौथा कंधा अर्थी में किसके, लाल बहादुर शास्त्री किसके अर्थी, किसका था, लाला लाजपत राय के या फिर भगत सिंह के, इसमें कंधा किसका था, पता नहीं किसका था। मैंने कभी तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं ये सब कहीं। ठीक है कोई बात नहीं। और यूपीएससी अगर ऐसा क्वेश्चन दे रही तो आप समझिए कि वो आपको डिस्टर्ब करना चाह रही है, वो ये दे करके ये चाहेगी कि आप डिस्टर्ब हो जाइए कि मुझे ये पता ही नहीं है। आउटराइट कह दिए मैं इसका आंसर नहीं दूंगी, ये फालतू बकवास क्वेश्चन है, जाओ लिखिए। नेक्स्ट, फेडरल कोर्ट हैड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस, फेडरल कोर्ट हैड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस? ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब समझते हैं? नहीं, ओरिजिनल, ओरिजिनेटर नहीं, ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब क्या होता है? असली। मीनिंग नहीं पूछ रहा हूं मैं। नहीं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब हो गया कि कोई और किस इस डिस्प्यूट रिलेटेड इश्यूज, जैसे प्रोविंसेस प्रोविंसेस के डिस्प्यूट या प्रोविंशियल और फेडरल के डिस्प्यूट्स को कहीं और कोई और जो कोर्ट नहीं सुनेगी, एक्सक्लूसिव कह सकते हैं आप उसे ओरिजिनल, वो डायरेक्ट वही सुनेगी, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप वहां चले जाइए, दिस इज ओरिजिनल। नेक्स्ट इज एपलेट जुरिस्डिक्शंस। एपलेट मींस अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट के जजमेंट को आप अपील कर सकते हैं टू द फेडरल, सो फेडरल कोर्ट इज आल्सो हैविंग एन एपलेट जुरिस्डिक्शंस, APPELLATE, एपलेट जुरिस्डिक्शंस, एपलेट जुरिस्डिक्शंस, APPELLATE, एपलेट jurisdictions and advisory jurisdictions. एडवाइजरी, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन समझते हैं ना, एडवाइस देना गवर्नमेंट को किसी भी मैटर पे, तो उनके फेडरल कोर्ट के पास ये भी जुरिस्डिक्शंस था। ठीक है, सो द प्रोविजंस टू एस्टैब्लिश अ फेडरल कोर्ट वाज गिवन इन 1935, but originally it was established in 1937 and that was culminated into the Supreme Court of India. Now write down miscellaneous provisions of 1935. Miscellaneous, others, miscellaneous provision या others provisions लिख लीजिए, extra provisions, first it abolished the Council of India which was established by Government of India Act 1858. It abolished the Council of India, abolished the Council of India which was established by Government of India Act 1858.
Next, by Act of 1858. Next, about 10% of the total population of India got voting rights. 10% of the total populations of India got voting rights. वोटिंग मतदान का अधिकार यस एक्सटेंड हुआ, पहले इससे भी कम था, अब इसको थोड़ा बढ़ाकर 10% कर दिया गया. मीन्स ये लिमिटेड फ्रेंचाइज, नॉट एन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, और इसको आप एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज भी कह सकते हैं. ये लिमिट कर दिया, नहीं इतने लोग ही देंगे. नेक्स्ट, द एक्ट स्टैब्लिश्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल. The act established, these are the factual which I am giving you, the factual data. So the act established Reserve Bank of India to control the currency and credit of country. To control the currency and credit of the country. Next, it further extended the principle of communal representations. Further extended the principle of communal representation by providing separate electorates, for the depressed classes, that is scheduled caste, women and labor. वुमेन एंड लेबर, ठीक है. और ये कॉमनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट कब हुआ था? 1932, 1907. Who was known as a father of communism in India? मिंटो. और ये आया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 से. कहाँ 1932, 1907. 1909 लिखा है आपने, 1909 का आपने वो निकालिए, क्या बोलते हैं जहां आपने नोट्स लिखे हैं, ये बताया है मैंने. नेक्स्ट, आपने कहा बीच बीच में रिवीजन कराते रहिए, तो मैं ऐसे ही कराऊंगा रिवीजन, पूछ कर क्वेश्चंस. नेक्स्ट, लेकिन जवाब भी देना होगा ना, पूछ भी मैं ही रहा हूं, जवाब भी मैं ही दे रहा हूं, तो मेरा रिवीजन हो रहा है. ठीक, चलिए नेक्स्ट. द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाइफन दीजिए, राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन. Public Service Commission. Second, provincial public service commissions, not state, rather provincial public service commissions. Provincial, not state. And the third, joint public service commissions for 2 or more provinces.
joint public service commission for 2 or more provinces. ठीक है, next point. The British Parliament retained its supremacy. The British Parliament retained its supremacy over Indian legislatures at both the level, that is central and provinces. The British Parliament retained its supremacy over Indian legislatures at both level, that is at the central level and also at the provincial level. That is control of federal legislature and control of provincial legislature. It's clear? So this is 1935 Act. नेक्स्ट इज 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट. ठीक है, इसका बैकग्राउंड अगर हम समझें इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, सो तो फॉर द बैकग्राउंड, दिस एक्ट ऑफ 1935 was a product of Simon Commission, one of the फैक्टर्स और पिलर्स जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इनैक्ट किया गया था बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, राइट. सो दिस साइमन कमीशन हैज प्रॉमिस्ड अ डोमिनियन स्टेटस. नाउ व्हाट इज डोमिनियन स्टेटस? हम इंडिपेंडेंस हैं बट सोवरेन नहीं रहेंगे. इट मीन्स कि दो ब्रिटिशर्स विल गो फ्रॉम हियर, इंडिया विल डू इट्स ओन, बट वी हैव टू बी अंडर द क्राउन. वी नीड टू शो आवर लॉयल्टी टुवर्ड्स क्राउन. क्राउन से हर चीज, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमारे लिए लॉ बनेगी. एवरीथिंग वी नीड टू गेट रेटिफाइड बाय आवर लॉ फ्रॉम द क्राउन. सो दिस इज dominion status, right? From in 1927, this is a period of 1927, but till 1930s, when the 1930s came, 1929 or 30 mein, Congress has started the demand of Purna Swaraj, a complete independence, not a dominion status. Yes or no? Is it clear? But though 1935 Act was based on Simon Commissions, did not provide a dominion status to the India. Rather, it has just given the constitutional arrangements, but it does not talk anything about the dominion status, whether country has been dominion status providing or not. So it does not give the country as a dominion status, and which has irritated the leaders. Take. Now, after this act, if we consider the 1939 period, so this is a period of Second World War. ये period आया, agitation चल रही थी, because now the Congress is now demanding for the Purna Swaraj. But though the promises made by the Britishers under Simon Commissions of Dominion status, but though that is not delivered through their act only, right? So this become the
issue for the criticisms. And now during this period a lot is happening at in इंडियन नेशनल मूवमेंट. जो 1930-40 का एक्ट है ना, बहुत कुछ चल रहा था यहाँ पर. जैसे इसी दौरान आपका ड्यूरिंग दिस 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाती है. यस और नो, राइट? एंड इंडिया हैज सपोर्टेड ब्रिटिशर्स इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द प्रॉमिस, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें मिलेगा और प्रॉमिस किया गया कि वी विल गिव यू द constitutional mechanisms to the Indian, but they again, the Britishers after the war, they failed to deliver the promise. So this time during this period, during the initiation of World War, now the Indian are not in a positions to support the allies. ये allies में थे? Remember the classes where we have done? So they come under the allies. So the Britishers does not, Indians does not want to support the Britishers in the World War II. But for Britishers, Indian support is necessary. अब आप पूछिए क्यों? Because of the Indian Army. Indian Army which is under the British Army was the largest army. Now Indian Army till the date has started to paying heed or listening towards the Indian nationalist. तो यहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा इंडिया, मॉडर्न इंडिया में तलवार इंसिडेंट्स पढ़ेंगे आप. तलवार इंसिडेंट्स, वो आईएनएस तलवार में जो रिवोल्ट हो गई थी, रॉयल मेटनी तलवार, आईएनएस तलवार नाम था, रॉयल मेटनी. फिर आप लाल किला, वो दिस हियरिंग एवरीथिंग, ये यू विल बी कम टू रीड इन मॉडर्न इंडिया. ठीक है. सो now to gain their support, and after this till 1945 as the World War II was, the Britishers has lose their roots in Britain, in Europe. After World War II US become superpower. 1939 आपका इकोनॉमिक डिप्रेशंस का, 1929-30 से इकोनॉमिक डिप्रेशंस का टाइम था. यूएस ने क्या करना शुरू कर दिया, जो उनको एड दे रहे थे, जो फिनेंस कर रहे थे, वो रोक दिया. तो इंडिया, ब्रिटिश इंग्लैंड में क्या हो गई, वीक हो गई. सो नाउ दे रश बैक टू द इंडिया थ्रू प्रोवाइडिंग एन इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट. नाउ थ्रू दिस एक्ट द ब्रिटिशर्स हैज मेड एन अरेंजमेंट. First accepted the two nation theory. That is of Pakistan and India as a dominion status. This act does not give it complete independence, rather it has established India as a dominion status. नहीं दिया वो, हाँ वो बाद में अरेंजमेंट हो गया. That has been, वो जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेंगे ना, तो वहां और डिटेल में करेंगे. इज इट क्लियर? सो 1947 से हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिली, वी बिकम एन डोमिनियन स्टेटस. नाउ दिस नेचर ऑफ इंडिया एज अ डोमिनियन स्टेटस through 1947 will continue till a new constitution was established by a constituent assembly of each dominion. तब तक क्या होगा? Till that time, India will be governed through the 1935 and 1947 Act. Both, not only India, but rather both this India and Pakistan. Right? So this is the first, you can say, arrangement, which is came to be known as an abolition of sovereignty and responsibility of British Parliament was end in the India. क्योंकि 1947 से पहले there was an election of 1946 and Constituent Assembly was established. Yes or no? Right? So this, the British Parliament has end their sovereignty and their responsibility has been end. Now it transferred to the Constituent Assembly of India, and the Constituent Assembly was made sovereign.
now you want to abolish any act, even the 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को भी आप चाहे तो पूरा abolish कर सकते हैं. So through this provisions, the responsibility of British Parliament towards the Indian is end. It means now Indian Constituent Assembly has been given the responsibility to enact any law. Clear? First provision. Second, under this, if we say that the crown's allegiance was abolished, जो 1858 में the crown has taken all the administrations of India into his hand, under their hand. Now the source of authority to the Indian is no longer a crown. Now the source of authority till the dominion come to with their own constitutions will be these two acts. It's clear? This is the second arrangement made by the 1947. Okay. Next, by next arrangement was that the Governor General and Governor of provinces, they were made constitutional head. What does mean? Now all their discretionary as their individual capacity or constitutional discretionary now was abolished. जो अभी तक गवर्नर किसी बिल को रिजर्व कर रहा था गवर्नर जनरल के दिस क्या बोलते हैं दिस कंसिडरेशंस के लिए, या गवर्नर जनरल किसी बिल को रिजर्व कर रहा था क्राउन के कंसिडरेशंस के लिए, दैट ऑल बिकम अनडेड. So all, it means that all discretionary power related to Governor General and Governor has come to an end. डिस्क्रिशनरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी, जैसे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना, मिनिस्टर्स को हटा देना, किसी बिल को रिजर्व कर लेना, किसी बिल के लिए एसेंट डिनाई करना, दैट इज वीटो लगाना, दैट ऑल हैज कम टू एन एंड. Now they are made a constitutional head, which means now these two, Governor of Provinces and Governor General, has to act on the aid and advice of Council of Ministers. For the Governor, there will be a Federal Council of Ministers, Governor General, or for Governor there would be an Provincial Council of Ministers, जो उनको aid और advice करेंगे काम करने के लिए, right? Another arrangement, that veto power was taken from Crown. Earlier there was a power given to Crown for vetoing the bill. वो कैसे होता? गवर्नर जनरल किसी भी बिल को रिजर्व कर लिया. Through the 1919 and 1935 Act, it is a provisions that the bill will become only act when the Governor General will assent and Crown will assent. So there is a vetoing power of Crown. By the 1947 Act, this veto power of Crown was abolished. And veto power means assenting the bill. किसी भी बिल को assent करना, तो that bill needs to become an act. Is this clear? So these are the certain arrangements which is came to be by this. By the 1935, and the last, that the this Dominion legislature has given a sovereignty, as we have already talked, that Constituent Assembly given a status of sovereignty, and it was said कि आप कोई भी law को enact कर सकते हैं. Even you have a power to abolish 1935 or 1947 Act. So they have given a sovereignty in terms of legislations. So these are the certain provisions. ठीक है, let's have an eyes over the certain provisions of 1947. इसके बाद मैं आपको इससे related interference I will dictate you the another things, but these are the provisions, and I hope you will have the act with you. ठीक है. So if you see the first, that it ended the British rule in India and declared India as an independent sovereign state from August 1947. It provided for a partition of India and creation of two independent dominions. Dominion of India and Dominion of Pakistan.
with the right to secede from the British Commonwealth. It abolished the office of Viceroy and provided for each dominion a Governor General who was to be appointed by British King on the advice of Dominion cabinets. Appointing authority Crown था, but on the advice of Council of Dominion Council, that is Federal Council. ठीक है? Who was the first India to be as an Governor General? Indian था Mountbatten. C. Rajagopalachari was the first Indian act as an Governor General for shorter period. Mountbatten के बाद देशबंधु C. Rajagopalachari. Then His Majesty government in Britain was to have no responsibility with respect to government of India and Pakistan. It empowered the Constituent Assembly of the two dominions to frame and adopt any constitutions for their respective nations and to repeal any act of British Parliament including 1935 and 1947 itself, including the Independence Act itself. ठीक है? So these are the certain provisions, right? अगर आप देखें then it empowered the Constituent Assembly of both the dominions to legislate for their respective territories till the new constitutions were drafted and formed. And till that time, they will be India and Pakistan will be ruled through 1935 and 1947 Act. No act of British Parliament passed after 1947, 15th August, was to extend to either of the new dominion unless it was extended thereto by law of the legislature of the dominion. So it is also said that it is up to the states, dominions. If they want to accept any law, then only they can accept. It abolished the office of Secretary of State for India, right? And when the Secretary of State was established, 1858, and transfer his functions to Secretary of State for Commonwealth Affairs. एक ग्रुपिंग बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के जितने भी कॉलोनीज थे सभी को लेकर के, जिसको तो इसको कॉमनवेल्थ बनाया गया. It proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely states and treaty relations with the tribal area from August 15, 1947. It granted freedom to the Indian princely states either to join the Dominion of India or Dominion of Pakistan or to remain independent. It provided for the governance of each of the dominion and provisions by Government of India Act 1935 till new constitutions were to be framed. So dominions were however authorized to make modification in the Act. It deprived the British monarch of his right to veto the bill or ask for reservation of certain bill for his approval. But this right was reserved for Governor General because he was acting as an constitutional head of the India. The Governor General would have a full power to assent to any bill in the name of His Majesty. It designated the Governor General of India and the Provincial Governor as constitutional head of the state, that is of a nominal head. They were made to act on the advice of respective Council of Ministers in all the matters. Now they do not have an overriding power. It dropped the title of Emperor of India, which is known as a Kazre Hind. और कब दी गई थी एम्परर टाइटल? 1911 दिल्ली दरबार, यहाँ पर वो पार्क है ना बुराड़ी जाने से पहले, किंग्सवे कैंप नहीं, ये आपका नहीं, अरे हाँ उससे पहले ही वो
निरंकारी वाला जो एरिया है ना वहां पे। It discontinued the appointment of civil services and reservations post by Secretary of State for India. The members of civil services appointed before August 15, 1947 would continue to enjoy all benefits they were entitled to till that time. So these were the factual points related to 1947. ठीक है, now write an interpretations of this 1947. ये एक्ट आपके पास होनी चाहिए, मिल जाएगी, एक्ट है कहीं में मिल जाती है। So give a title, India Independence Act. First point, first subheading under India Independence Act. First subheading, abolition of sovereignty and responsibility of British Parliament. Abolition of sovereignty. Sovereignty समझते हैं ना? Sovereignty and responsibility of British Parliament. Now write down certain points under this. Abolition of sovereignty and responsibility of the British Parliament. First point, Act of 1947 declared that with effect from 15th August 1947, with effect from 15th August 1947, India cease, CEASE, cease to be dependency and suzerainty, SUZE, लिखिए ना, SUZERAINTY, suzerainty, why dependency? Suzerainty, dependency is the same thing. India ceased to be dependency and suzerainty of the British Crown over Indian states. अधीनता, ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन स्टेट्स। तो इंडियन डिपेंडेंसी और सुजैनिटी दोनों खत्म। इंडियन स्टेट्स वे डिपेंड ऑन द ब्रिटिश क्राउन, यस और नो? इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट डिपेंडेंट थे और सुजैनिटी थी प्रोविंसेस, वो दोनों खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, the British government and parliament for administration of India also ceased. Also ceased, ठीक है। इट मीन्स आप कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई लॉ इंडिया के लिए नहीं बनाएगी, उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज अबॉलिश्ड।
abolished. The office of Secretary of State for India was abolished. Next, treaty relations with the tribal areas also lapsed from the date. Treaty relations with tribal areas also lapsed from the date. ठीक है. Next, Governor General for each dominion. Governor General for each dominion was to be appointed by the Crown on the advice of Dominion's cabinet. So this is the first heading, abolition of sovereignty and responsibility of British Parliament means. ठीक. Dominion cabinet, मतलब council of minister. Now write down the second heading, second provision of the act. The Governor General and Provincial Governor कौन सा पॉइंट? Governor General for each dominion who was to be appointed by the Crown on the advice of Dominion Cabinet. Full stop. Yes, but on the advice of Council of Ministers. Dominion मतलब इंडिया और पाकिस्तान के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे अब इस एक्ट के बाद अपॉइंट करेंगे. पहले तो वो ब्रिटिश के अपॉइंट में करते थे. इस एक्ट में यह प्रोविजन दिया गया कि गवर्नर जनरल जो है डोमिनियन के लिए वो अपॉइंट क्राउन कर रहा है, लेकिन इनके एडवाइस से. ये जिसको कहेंगे उसे वो करेंगे. ठीक है. अपॉइंट टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस. अब कंप्लीट है. नेक्स्ट हेडिंग, the Governor General and Provincial Governor to act as constitutional head. Act as constitutional head. First point under this. अरे पानी तो जाने दे. Governor General and Provincial Governors to act as constitutional head. थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं कर दूंगा. Constitutional head. Now what do we mean by this? First point. Governor General and Governors lost their power of गवर्नर जनरल्स, जी लिख लिया कीजिए गवर्नर जनरल की जगह, एंड गवर्नर्स लॉस्ट देयर पावर्स ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑर्डिनेंस. उनके पास पहले थी, अब वो ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते हैं. पावर प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑर्डिनेंस अध्यादेश, कॉमा, द पावर ऑफ सर्टिफिकेशन. Next, governors of provinces cannot suspend the provincial assembly. Next point, under the same heading, governors of the provinces cannot suspend the provincial assembly. Suspend the provincial assembly. No veto power to the crown.
प्रोविंशियल असेंबली, पहले इनके पास पावर था कि दैट दे कैन यूनिलैटरली with using their discretionary power they can suspend provincial, but 1947 act के बाद this power was taken back, so their discretionary capacity भी चली गई, अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, right? Now the crown veto power was also seized, no veto power to crown, तो लिख लीजिए crown veto power was also seized, but 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 governor general, but governor general has the power to assent the bill in the name of crown. In the name of crown, ठीक है. Now write down the third heading, sovereignty of dominion legislature, sovereignty of dominion legislature. First point, the central legislature of India composed of, the central legislature of India composed of legislative assembly and council of states now cease to operate. तो जो फेडरल असेंबली थी, फेडरल लेजिस्लेचर, उसको खत्म कर दिया गया. 1935 से फेडरल लेजिस्लेचर बनी थी, बाईकैमरलिज्म बना था, दैट इज फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, सो दैट वाज नाउ अबॉलिश्ड बाय दिस एक्ट. ठीक, तो फिर क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, constituent assembly would function as a central legislature. Assembly would function as legislature of India. ठीक है, तो वो जो अरेंजमेंट था आपका फेडरल लेजिस्लेचर को, उसको अबॉलिश किया फ्रॉम द 1935, और उसकी जगह जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको ये पावर दे दिया कि अब आप ही पार्लियामेंट की तरह, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर की तरह काम करेंगे, राइट? तो आपने लिखा है एज अ सेंट्रल लेजिस्लेचर, विच मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was to have a dual function, which means the constituent assembly was to have a dual function, dual functions. First, dual function, first function is to make constitutions, constitution making power. ठीक, एंड सेकंड फंक्शन इज ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड, लिखना नहीं है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशंस. 1947 एक्ट के बाद इट वाज गिवन वन मोर रिस्पांसिबिलिटी कि अब जो कंट्री में ऑर्डिनरी लॉ चाहिए अदर देन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी अब आप ही बनाएंगे. जो हमारे पास फेडरल लेजिस्लेचर थी उसको हमने अबॉलिश कर दी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमने आपको दे दी. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर 1947 एक्टेड एज अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, आई मीन आफ्टर द थ्रू 1947 एक्ट. नेक्स्ट पॉइंट, नो सैंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल वुड बी रिक्वायर्ड
to legislate on any matter. ठीक है, is it clear? So this is the historical perspective of India, that we have completed the act is done. Now next we will start the making of constitutions, that is constituent assembly, but in the next class. It will take another 2 and 3 hours. तो फिर अभी स्टार्ट करें, फिर स्टार्ट करें, तो start in the next class. And after this we will enter into the salient fundamental salient features, फिर philosophical part. ठीक है, so that we will do. ठीक है, चलिए कौन सब क्वेश्चंस? हाँ, क्वेश्चन 1935 एक्ट से है, देखिए अभी तो मैं आपको उसको इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं, मतलब क्वेश्चन में, या मैं जो बोल रहा हूं आई मीन क्लास में क्वेश्चंस निकालिए. डू यू हैव दिस एनीवन? टाइप और इन गूगल द क्वेश्चंस इन मेंस फ्रॉम द 1935 एक्ट. और फ्रॉम द एक्ट. कोई सर्च कर रहा है या मुझे ही देख रहे हैं आप लोग? नहीं मिला? नहीं मिला तो मैं ले आऊंगा नेक्स्ट टाइम, मुझे मिल जाएगा. और दूसरी चीज कि हमें बैकग्राउंड स्टैब्लिश करने के लिए पढ़नी पड़ेगी. अभी तक क्वेश्चंस नहीं आया तो इसका मतलब नहीं आ सकता, ऐसा तो नहीं है. हाँ दीजिएगा तभी तो मुझे मिलेगा. यस. Did the government of India Act 1935 lay down a federal constitution? No. अभी तो आपने सब कुछ लिखा, कैसे उसमें क्या है, किसके पास ज्यादा पावर है, तो आंसर तो पहले यस और नो में लिखना ही नहीं है. आपने स्टेटमेंट ही यस और नो, तो उसके आगे वो पढ़ेगा ही नहीं. आपने अगर लिख दिया ना यस या नो, तो उसके बाद आपने जितना भी उसको एक्सप्लेन किया वो नहीं पढ़ेगा, बस यस और नो पे मार्किंग करेगा. तो 15 नंबर है तो कम से कम आपको उसमें यस और नो पे 0.15 तो दे ही देगा. अब कंसेप्ट पे काम करना है. कंसेप्चुअल, फैक्चुअल नहीं है वो, कंसेप्चुअल है. तो अब क्या ना कि सर इस पे क्वेश्चन नहीं आता. क्वेश्चन जो है ना वो तो एक तो इंटरलिंक आने लगा, दो तरीके से इंटरलिंक हो गया. लीजिए, एक तो इंट्रा सब्जेक्ट और इंटर सब्जेक्ट, इंट्रा टॉपिक और इंटर टॉपिक, यानी टॉपिक के अंदर भी लिंकेज है और टॉपिक टू टॉपिक लिंकेज है. एक क्वेश्चन में पार्लियामेंट से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में प्रेसिडेंट से क्वेश्चन, उसी सेम क्वेश्चन में एक्ट से क्वेश्चन, तो हो गया इंटरलिंक बिटवीन द टॉपिक. इसीलिए हमें अभी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, कंसेप्ट पे काम, वी नीड टू डू दैट व्हाट वी आर डूइंग, नॉट एन इश्यूज. ठीक है, तो चलिए वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, सो विल कंटिन्यू विद दिस. और स्टार्ट, थैंक यू टू एवरीवन. तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द प्रीवियस ईयर पेपर, देखने रहिए एक्ट से जो भी क्वेश्चंस आ रहे हो इधर इनटू द प्रीलिम्स और इन द मेंस. सो स्टार्ट प्रैक्टिस whether you are in a position or. ठीक है, आंसर दो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.